of Indian politics since the days of the freedom struggle. Yet their participation in governance and their presence in legislatures and decision making institutions is insignificant. This is contrary to worldwide trends, which have seen more women entering legislatures and shaping laws. 7 decades after independence, women occupied before the passage of the recent women's reservation. They occupied, or right now I should say, they occupy 14% of seats in Parliament in 2019, and their representation in state legislatures is very low. It stands at an average of 9%. Now, the political marginalization of women impelled the women's movement to campaign for reservations for women. This campaign, which began in the 1980s, gained momentum in the 1990s with calls for reserved seats. Basically, this campaign challenged political monopolies that had generated much debate, interest, and opposition. In this talk today, I will discuss the debate over reserved legislative seats for women in order to understand the wider debate on political representation and the structural dynamics that influence these processes. I will describe three moments briefly in this process: the changing position of women's groups on reservations in the 1990s, the introduction of uh, the Women's Reservation Bill under the Congress led United Progressive Alliance government, and the disputes over reservations following its introduction, and the passing of the Nari Shakti uh, Nandan Adhinayam by the BJP, the Bharatiya Janata Party led government, the National Democratic Alliance, in 2023. I think we need to understand not just the history of the demand, but also the politics that raised the demand and why it encountered so much opposition and why it has been passed quite easily now. So I shall at one level engage with the substantive issue raised in the debate surrounding the demand for a caste quota within the women's reservation. Uh, I shall at one level engage with the substantive issues raised in the debate surrounding the demand for a caste quota within women's reservation and the issues arising from the conditions that have been attached to the Nari Shakti uh, Vandan Adhinayam of 2023, or for short NVSA. At another level, I shall build an argument for a politics of presence on the ground that the presence of women in decision making institutions can transform the political agenda and at the same time note the political context and implications of centralized decision making with regard to the NSBA 2023 for Indian democracy. Now, the campaign for women's reservation has a long history. The political reservation for women can be traced back to the Indian national movement. Legislative reservations were discussed then, but there was a great deal of opposition to the proposal for reserved seats for women, and the Congress, which was leading the national movement, opposed special electoral rights. It argued that reserved seats would irreversibly link religious identity and political power, even with regard to women's seats. They argued that guarantees of women's presence in legislatures was subsidiary to the main goal for freedom, and they demanded the right to be elected. That is, women who were participating in the national movement agreed with this, and they demanded the right to be elected to legislatures, but with equality and privileges and no reservations. Now, after independence, the Congress governments made attempts to fulfill
promises of constitutional equality it had made to women, and the state designed many policies to meet the needs and requirements of women. However, despite their initial promise, democracy, equality before law, and universal adult franchise failed to remove gender disparities. In 1971, the government appointed um, the Committee on the Status of Women to examine the constitutional, legal, and administrative provisions that have a bearing on the social status of women, their education and employment, and to assess the impact of these provisions. Now, the CSWI presented a scathing critique of the political process, the worsening political position of women, and the inadequate positive impact of government policy. Two members, in the light of this report, or in the light of the findings of this report, suggested reservations, but that was hotly disputed and opposed by the majority of members of the Committee on the Status of Women, and they argued, much reminiscent of the arguments that were made during the national movement, that women do not constitute a community. They are not a category, and their interests should not be separated from the economic, social, and political interests of other groups and strata. However, by the time this report was submitted, many countries had accepted women's quota as a way of enhancing the presence of women in legislatures and public employment, and a large number of countries were using various types of gender quotas. But the Indian Women's Organization was still opposed to it well until the late 70s, and instead it focused on political empowerment and employment, education, and so on. But women's groups and the women's movement changed track in the 1980s, and they began to focus more explicitly on increasing the political representation of women through reservation. They realized that electoral compulsions are preventing political parties from fielding women candidates. But from the very beginning, this demand, once it gathered momentum in the 80s and I would say by the late 80s, it faced considerable opposition, despite it being a logical continuation of resolutions in panchayats and local level institutions. Now, the second moment then is that the Women's Reservation Bill was introduced in 1996 and several times since then, but it failed to pass on each occasion. And it is worth noting that until recently, few pieces of legislation in the history of Indian Parliament have generated as much controversy and as much opposition as the women's reservation proposal. And not surprisingly, it was listed for debate in every session of Parliament since 1996, but it was stalled. Now, the United Progressive Alliance government, the UPA government, introduced the Women's Reservation Bill in Rajya Sabha, and it was passed in 2010 amidst much hangama and amidst much opposition and so on. But it was passed. However, the UPA failed to introduce it in the Lok Sabha, and that is where the matter stood well until 2023. And women's reservations during this period, that is from 1996 to 2023, faced major opposition from state-based parties, from regional parties, and backward caste leaders who were worried that elite women will corner the benefits of reservation.
But arguably, it provoked stiff opposition mainly because it called for power sharing, which the political class, dominated by men, was not inclined to accept. Most male politicians feared that if it becomes the law, it would shake the ground beneath their feet. It would put their political careers at risk. Besides this, mm, uh, most political parties have taken no initiative to reduce gender disparity in elected bodies except in panchayats. And this uh, problem has been compounded by the inadequate representation of women in political parties and hence their disregard, one might argue, for women's issues. Interestingly, during the time when the UPA was in power, four major political parties were headed by women, but women were still hugely underrepresented in all political parties, be that the Congress or the Bharatiya Janata Party or the left parties, and so on. So it was clearly difficult for women to participate in politics in the face of these structural disadvantages, which were inherent within political parties. And not surprisingly, then, most political parties were reluctant and have been reluctant and are reluctant to field women, and they blame their low winnability for this phenomenon, even though the performance of women candidates is the same as that of men. This is an extremely specious argument because voters accept them no differently from their counterparts. Uh, and that is because voting in India is on the basis of parties and support and loyalty to a party and not the gender of a candidate. Mm, Moreover, if it is really true that women candidates are not winners, it actually strengthens the case for reservations because that would ensure that they would win in at least one third of constituencies. Now, this then brings me to the third moment, which is now, and that is that nearly 3 decades after the original Women's Reservation Bill was introduced, Parliament passed the Constitution 125th Amendment Bill 2023 in September of last year, officially known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, NVSA. And this was passed by both houses of parliament with just two votes against. When implemented, it will, of course, ensure that women will occupy at least one third seats in 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 Parliament and state assemblies. Now, significantly, seats reserved for women will be rotated after each delimitation, as determined by a law made by Parliament. And also, it's important to note that the rotation will, under this new legislation, will actually happen every 10 years and not every 5 years as it was envisaged under the 2010 bill. So, now, as I noted, the six previous attempts to pass the bill had failed, mainly due to the demand that the women's reservation include a sub quota for women representing backward castes. Now, this time, now the Congress did not concede that demand, though now, as we know, it has uh, agreed to that and is in fact insisting now the sub quota for backward caste, which this government, which passed the new bill, hasn't agreed to. But the fact is that the Congress failure to uh, uh, push the bill provided an opportunity
to the present regime to pass the bill. And this time, as I mentioned earlier, it passed quite easily with all parties backing it, including those who were so staunchly opposed to it in the past. And I think the main reason why it has passed so easily is because the present government has a majority in parliament, which previous governments were coalition governments and they did not have a majority and they could not really deal with the opposition from coming from their own allies. Now, but interestingly, despite an absolute majority of 303 seats in parliament, this bill was introduced without consulting other parties. It was shrouded in secrecy, as a DMK MP remarked in her speech on the floor of the House in September. Many opposition MPs actually quite rightly protested against the surprise announcement, questioning whether a special session of parliament, and you recall a 5-day session of parliament was called in the third week of September, in which this bill was passed. They very rightly asked whether a special session was required for what could have been a routine matter in a regular session of parliament, since all parties were supporting it. And if they had consulted all parties, they would have realized that no one was now opposing it. And secondly, and very interestingly, despite a majority in the Lok Sabha, the ruling party waited till the end of its second term to pass it. This itself is very significant, and it obviously reflects the political compulsions and purposes behind passing this reservation now. Now, the ruling party, the BJP, was quick to claim authorship of women's reservations, asserting that it has rescued it from the inaction of previous governments as the bill had gathered dust for 27 years. The former Congress president, Sonia Gandhi, was quick to claim that the bill is ours, apna hai, as she put it in her comments to the press, in response to a media query on the new reservation legislation. She also significantly demanded a separate quota for women's reservation, even though they did not concede that demand when they were in power. But of course, the demand for a sub-quota for OBCs was strongly countered by the Home Minister, asserting that the BJP has many OBCs in its ranks and among its lawmakers. And therefore, and of course, he pointed out that the Prime Minister is from the same community, and therefore he saw little reason for a sub quota for OBCs. Now, the passage of the NSVA, that is to say, the Nari Shakti Vandan Adhinyam, is important, certainly, but it also highlights the growing recognition of women as a powerful electoral force. Women are voting in large numbers, much greater numbers than before. And the 2019 Lok Sabha election registered a 5.1% increase in women's votes in both in the Lok Sabha elections, and the same is the case in the subsequent Vidhan Sabha elections, which have also seen a very significant increase in voting by women. This indicates that women have emerged as a significant force in elections. But it also needs to be noted that even as women are being wooed more aggressively
uh, 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 more aggressively by political parties in elections, their participation in the labor force is declining. The female labor force participation rate has fallen from 25% in 2014 to 24% in 2022. It is lower than Bangladesh, for example. Uh, this is a huge waste of economic potential, as only 18% women in India are in paid employment. The government today is claiming that there is an increase in women's employment, but that employment is unpaid employment. The point is to increase paid employment. So, greater electoral participation of women has certainly not lessened economic and social discrimination against women in our society. And the scenes outside Parliament after the passage of the 2023 legislation reserving seats for women was in sharp contrast to the visuals just a few weeks or few months earlier when women wrestlers were dragged on the streets. I think these contrasting images of celebration of women's reservation and women wrestlers being dragged illustrates this paradox of political empowerment and economic and social disempowerment. And the irony could not have been starker, with one promising a greater role in the strengthening of democracy in India, and the other symbolizing the stark denial of even the right to seek justice for crimes against women. That said, the NVSA is an important reform. Some have even called it one of the most important reforms in independent India. But the point is that this is something that is going to happen in the future. Uh, Surely, when it is implemented, it will pave the way for greater political participation of women in Indian politics. But the timeline for reservation for women, is uncertain. The implementation has been postponed to a distant future by imposing two conditions of census and delimitation or the redrawing of constituency boundaries. There was no legal necessity of linking the NSDA to the next census or to the next delimitation. Yet the new law stipulates that reservations will only begin after delimitation, which, as we know, is hugely controversial. Mm, So, uh, so the new legislation stipulates that reservations will only begin after delimitation is completed based on numbers of the first census after the passage of the act. And we know that the 2021 census has not happened. There is no date as to when the next census will actually happen, but possibly the earliest that it can take place would be possibly optimistically at the end of this year or possibly in 2025. So this means that reservations for women may not come into effect until 2029, as delimitation of constituencies will take place after 2026. And as we know from past experience, delimitation takes 5 to 6 years, which means it may not even be implemented before 2023. So, or even as late as some people, some political analysts have argued, it may not even start till 2039.
Secondly, and importantly, the NVSA does not address the impact of women's reservation on OBCs because it contains no provisions for reservations for OBCs. So the possibility of reduced representation of marginalized communities, which is to say OBCs and minorities, particularly Muslims, who are hugely underrepresented in legislatures, cannot be ruled out. That is, their further marginalization, particularly, I would say, of minorities, cannot be ruled out. But the important question, as far as, of course, no one is thinking of Muslim underrepresentation. There is only concern about OBC, how they will be affected. But the important question really is whether the sub-quota for OBCs can be implemented without data or without a caste census and information on their numbers nationally and within states. Now, in conclusion, then, I want to note 2 points. The politics of reservations and representation and the problems reflected in the debates around it underline the very negative role of political parties and their role in the lack of progress in recruiting women to to participate in politics and decision making and to run for elections. Parties have made no serious efforts to nominate a greater number of women from the backward caste or minorities. It would be very interesting to see whether in the elections which are the Lok Sabha elections which are going to happen in the next few weeks, will political parties put up more candidates? Because right now, uh, this legislation, the NSVA hasn't come into effect, but all parties are supporting it, and therefore one would expect that they are committed to greater representation of women. But the question, and I think that is something for us to watch out, is whether political parties will give more tickets, if not 33%, at least 20% tickets to women. I think that would be something very important and interesting. So, as I said, parties have made no serious efforts to nominate a greater number of women from backward castes or minorities. Asaduddin Owaisi from your civil had opposed the bill. He was one of the two people who opposed the 2023 women's reservation legislation. And his opposition to the bill illustrates this. Illustrates this while opposing the NSVA 2023. Owaisi cited the lack of an internal quota for Muslims and backward class women as the reason for his opposition. But his party, the All India Majlis-e-Ittehad al-Muslimin, hasn't fielded a woman candidate in assembly polls, even in Telangana, leave alone the many other states that the IMM contests elections in. Thus, this makes it clear that it is imperative uh, to have reservations for women because parties themselves have not shown the resolve or the inclination to field more women candidates or to support the demand for sub-quotas, without which they're unlikely to nominate women from diverse groups or push for an intersectional representation on their own. Finally, the final point concerns the way the ruling party has used, that is, the present ruling party at the center, has used its focus on women and women centric schemes and placing women in seats of power, including the election of the first woman president of India from an Adivasi community, as proof of its commitment to women's empowerment and representation. Now, the framework of appealing to women voters
with women-centric schemes is tricky, as, as what should be their right is offered as largesse of the state and its leader. Bringing more women into national and state politics and appointing women from diverse backgrounds is a significant step for women's representation, which can make governance more responsive, more democratic, more inclusive, and possibly more effective and efficient as well. And it would obviously also be responsive to women's interests and needs. But the majoritarian dominance of the Hindu right in the last 10 years in our polity and society has tended to undermine the checks on executive power. It has sidelined the political opposition. It has cracked down on civil society and civil liberties, on the academia, and above all, on an independent media. The centralization of power that this reflects and the concentration of power in the executive branch and closing spaces for dissent will inevitably weaken the representational gains of women. Thank you very much. Thank you very much, Professor Zoya Hassan, for the very thought-provoking lecture on the issue of politics of women reservation in India. Uh, uh, there are still so many things which are coming in our minds. There are a lot of questions from the audience, but because of the paucity of time, we cannot take questions from the audience. Zoyapa was making very important points in her address. One was that the present government could pass the women reservations bill because of the fact that they are in power. So, that situation goes in favor of the women in India, and that is why we should celebrate Women's Day more today because the bill is passed. Another important point that she It's made not was No, but Farida, I must point out it has no doubt been passed, but its implementation is in the distant future. It's yes, unlikely yes, to be implemented for almost another 10 years. yes. So. Yes. One more important point that you made was कि औरतें मैं बच्चियां यहाँ मौजूद हैं और मैं इसको उर्दू में बोलूंगी बिल्कुल कि भले ही पॉलिटिकल भले ही रिजर्वेशन हो गया हो यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया हो लेकिन दूसरे बरक्स इसके बरक्स समाज में एक और सिचुएशन है कि औरतें अभी भी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, सोशली एम्पावर्ड नहीं है. तो प्रोफेसर जोया इस बात को, इस कंसर्न को भी एक्सप्रेस कर रही थी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महज जरूरी नहीं है, इसके साथ सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है. और इसके साथ जो अभी आपने कहा कि इसका जब भी हम जेंडर डायमेंशन पर डिस्कशन करते हैं तो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में को अगर हम समझने की कोशिश करें पॉलिटिक्स ऑफ वीमेन रिजर्वेशन में तो दूसरे फैक्टर्स जैसे कि कास्ट, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि रिलीजन किस तरह इसके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्ट डालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मुझे लगता है कि ये तमाम फैक्टर्स अपनी अपनी तरह अलग अलग तरह रिस्पॉन्ड करेंगे जब बात आएगी, जैसे अभी आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन की. तो
तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी सरकार के सामने इसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकात इसको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, इस तरह से नहीं जैसे हैदराबाद से हमारी एक ऑपोजिशन आवाज उठी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी समाज के तमाम लोग इसको बहुत वेलकम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि वीमेन रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ वीमेन रिलेटेड इशू नहीं है, ये समाज का इशू है, ये ह्यूमन राइट का इशू है। एक आधी आबादी को मुल्क के आप हमेशा मार्जिनलाइज्ड, गुर्बत में ट्रैप्ड नहीं रख सकते हैं। तो आपसे बेहतर इस टॉपिक पर बोलने के लिए कोई बेहतर स्पीकर नहीं हो सकता था। हालांकि हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी आपसे कि हम ऑडियंस से सवाल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आज जुमा है और नमाज का वक्त हो गया है, तो हम ब्रेक लेंगे नमाज के लिए। बेहद शुक्रिया स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन स्टडीज़ की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की जानिब से मैं आपसे आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे कभी हम आपको ज़रूर सुनेंगे। बज़ाते खुद आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगी, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी माजरत है कि मुझको हमें उर्दू में बोलना चाहिए था, मगर जो हमारे पास इस वक्त एक हमने जो लिखा हुआ था पर्चा जो वो अंग्रेजी में था, मगर उम्मीद यह है कि आइंदा उर्दू में ही तकरीर करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके पर। बेहद शुक्रिया। अब आप क्लोज कर सकती हैं, ऑफलाइन जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर्स को दावत देंगे डायस पर, और आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर शबाना और आमिनत तहसीन को दावत देती हूँ। प्लीज डायस पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे मेहमानान को डाइस पे बुलाना चाहूँगी। प्रोफेसर रेखा पांडे मैडम, प्रोफेसर शाहिदा, प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी साहिबा, प्रोफेसर आमना साहिबा, प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अगेन आई थिंक इट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के इस मुबारक मौके पर मैं आप तमाम हाज़रीन का फिर से इस्तकबाल करती हूँ। प्रोफेसर ज़ोया हसन साहिबा को आप सुन चुके हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन एंड डायनामिक्स बिहाइंड रिजर्वेशन ऑफ विमेन पे बात कर रही थी। ऑनलाइन उनका प्रेजेंटेशन था। इसी सिम्पोजियम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आज और दो मजीद स्पीकर्स, प्रोफेसर रेखा पांडे साहिबा और प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब। इनका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। मतीन साहब को पहले बुला लेते हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है। डीन साहबा ने वैसे हम दोनों को क्लब कर ही दिया था, तो हालांकि मेरा जो वेलकम एड्रेस है इसकी ज़रूरत नहीं है। आप तमाम यहाँ मौजूद हैं, इसकी हमें खुशी है, तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी बात को कम करती हूँ।
चलिए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, तो मैं अब सीधा प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब को दावत देना चाहूंगी। उनको बुलाने से पहले एक छोटा मुख्तसर सा तारुफ, जरूरत नहीं है। चलिए, अब उनकी बातचीत से ही जाहिर हो जाएगा कि वो कितना कैलिबर रखते हैं। एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक एएमयू से रहा है बहुत लंबे अरसे तक। सर, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप अपना पहले फूल वगैरह। जी सर 2 मिनट। मैं अपने वॉलंटियर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बुके और मोमेंटो लेके आए, और चेयर को जी प्रोफेसर शाहिदा साहिबा से दरख्वास्त है कि वो हमारे आज के स्पीकर प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब की खिदमत में मोमेंटो और बुके पेश करें। इसके बाद हमारी एक और स्पीकर प्रोफेसर रेखा पांडे साहिबा के लिए मैं हमारी डीन मोहतरमा प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो उनकी खिदमत में मोमेंटो और बुके पेश करें। अब मैं जी हाँ सर का जो पीपीटी है मुझसे पीपीटी की तैयारी होने तक बस इतना कहना चाहूंगी कि जब हम जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए देखने के लिए। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज के हमारे पैनल में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस से भी हमारे एक्सपर्ट रहे, हिस्ट्री से भी हमारे पास एक्सपर्ट हैं, सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं और जेंडर एंड वुमेन स्टडीज की एक्सपर्ट है। मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ, तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन पैनल का एग्जाम्पल हो नहीं सकता। और हमारे दरमियान जो हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं यकीनन वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्कॉलर्स हैं। इनके तारुफ की हमें मैं समझती हूँ कि यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे तलबा जब ये नाम सर्च करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये कितने कैलिबर के लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर का, प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी का और आमनत हसैन का कि मुझे इनवाइट किया गया। आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ये एक ट्राइपेक एनजीओ है और ये नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के बाद मैं 2018 से नॉर्थ ईस्ट में हूँ और मुझे ये मौका मिला वहाँ कुछ काम करने का, समझने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इनॉग्रेशन में, और अभी प्रोफेसर अरुण कुमार के लेक्चर से भी इस बात को आपसे शेयर किया गया कि किस तरह से मार्केट और स्टेट बहुत अहम रोल अदा करता है किसी एक आम आदमी के लिए। आज सुबह जब प्रोफेसर अरुण कुमार बात कर रहे थे तो किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें वुमेन का अच्छा खासा एक नंबर शामिल है, धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं। तो मैं जो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें लगभग 80-81 करोड़ जो आबादी का हिस्सा है 140 करोड़ में, और उसमें अगर 50% मान लें तो लगभग 40 करोड़ जो ख़वातीन हैं और उसका जो मार्जिनलाइज्ड स्टेटस है और धीरे धीरे उसमें इजाफा होता जा रहा है। और वो हम इंक्लूज़न के लिए क्या कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये एक्सक्लूड होते जा रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं, बल्कि ये है कि एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम इंक्लूज़न के लिए क्या कर रहे हैं। तो इंक्लूज़न के लिए हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है 5 साल या उससे ज़्यादा के अरसे का वो शामिल है। उसमें
मेरा जो हम लोग का जो ट्राइबेक का जो कंट्रीब्यूशन, ट्राइबेक 2003 में आप मुख्तसर में देखें तो इसका वजूद 2003 में आया और मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जाहिर है कि मुझे क्विकली लगभग जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाद दूसरे स्पीकर हैं और वक्त की कमी है, तो लेकिन इसमें एक अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है उसमें, लेकिन एक जो ख़ास बात है जो हम लोग ट्राइबेक में कर रहे हैं दूसरे NGOs के बरक्स, कि बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लाइवलीहुड किस तरह से जुड़ा हुआ है उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ काम करने की। ये अभी तो ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम का ये प्रोजेक्ट है 6 करोड़ का, और उसके साथ साथ एक बैम्बू प्लांटेशन के लिए जर्मनी एम्बेसी के ज़रिए एक और प्रोजेक्ट मिला है जो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो अभी तक जो हमारा फोकस था वो मेनली इसमें ये भी आप अचीवमेंट देखेंगे कि हमने 5000 SHGs को डेवलप किया, 5000 रूरल इंटरप्राइजेज हमने किया, फिर वो 300 हेक्टर और को हमने बैम्बू प्लांटेशन के लिए किया। ये सब ट्राइबेक जो NGO है इसका अचीवमेंट है, और जाहिर है कि एक छोटा सा NGO के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे तो जो फिगर देखने में बहुत लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं किस तरह से SDG 1, SDG 5, SDG 7, SDG 13 और SDG 15, ये जितने भी UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको शामिल किया गया। उसके पर्सपेक्टिव से उसको ध्यान में रखते हुए हम जो काम कर रहे हैं उसी फ्रेमवर्क में है। ये जो हमारा काम करने का तरीका है उस पे ये दर्शाता है कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो अभी तक जो हम लोग का जो फोकस था कि ज्वेलरी का काम जो हमने उसको ट्रेनिंग दी, स्किल डेवलप कराया वहाँ के लोगों को जो अनस्किल्ड थे, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, और ये जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ट्राइबेक का जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से हो पाया है। अलग अलग तरह के जो अलग, चूँकि ये आसाम के अलग अलग जगहों पे है तो इसलिए ये आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ का है, ये हम लोग बना रहे हैं। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, ये भी हम लोग ये कर रहे हैं। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ जो ट्राइबेक के ज़ेर तहत हो रहा है उसको दिखाता है। ये इसमें आप देख रहे हैं कि फिर हम लोग प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स भी देते हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो उन लोगों को एक है कि सर्टिफिकेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है उसका। और ये एग्जीबिशन में भी उन लोग को ले जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उसको हम बाय बैक करते हैं, उसको फिर मार्केट में लाते हैं। तो एक जो कॉन्सेप्ट ये मोबिलाइजेशन है कि उसको किस तरह से हम परस्यू करते हैं कि आपको किस तरह का स्किल चाहिए, वो सारा एक प्रोसेस है। सोशल वर्क वाले इससे बाखबर हैं और वो समझते हैं कि किस तरह से मोबिलाइज किया जाता है। फिर वो आर्टिजन्स हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब एक जो हम लोगों का अभी ध्यान, और मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि हाउसिंग सेक्टर में, रियल इस्टेट में भी हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं। पहले भी कोशिश की थी जो कुछ हद तक नाकाम रहा। एक तो अभी हम लोग जिस बिल्डिंग में हैं ये कंक्रीट का है, इसके बरक्स अगर वो बैम्बू का यही ये बिल्डिंग होता तो इसके कई फायदे होते। एक तो ये कि बैम्बू सस्टेनेबल है, दूसरा ये कि जो कार्बन इमिशन है इस बिल्डिंग का, अभी मैं आऊँगा उस पर, टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आर्किटेक्ट और मैथमेटिशियन के साथ काम कर रहा हूँ उस पर, अभी मैं अगले स्लाइड में आऊँगा। तो उसमें
कार्बन इमिशन हम कैसे कम कर सकते हैं और जो जीरो इमिशन पे जो गोल है उस पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसी की तरफ उसका इम्प्लीकेशन है। और इससे एक तो रूरल पॉवर्टी रिडक्शन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है और जेंडर इक्वलिटी है। हम जितने भी जो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं वो सब के सब वुमेन है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये मॉडल घर है जो हम लोगों ने बनाया है और ये त्रिपुरा में है। हम लोगों ने त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की, जिसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए और उसको नए सिरे से इन्वायरमेंट से रिलेट करके फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के साथ। इसमें बैम्बूज में हजारों उसके टाइप्स है। सारे बैम्बूज अलग अलग बैम्बू के अलग अलग यूटिलाइजेशन है, तो टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। ये चंद टाइप्स हैं जो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब एक कॉन्सेप्ट है डीकार्बोनाइजेशन, क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज में अभी दुबई में जो हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर का है कि भाई 45% रिडक्शन होना चाहिए। तो किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो करें या मिनिमाइज करें, तो उसके लिए किस तरह हमारा इनिशिएटिव ट्राइबेक, हमारा सबसे मुराद ट्राइबेक का इनिशिएटिव इस गोल को अचीव करने में कुछ हम लोग की जो कोशिश है वो काम आ सकता है या उससे जुड़ा हुआ। इसमें 3 मॉडल की बात जो अभी हम लोग सोच रहे हैं वो ये है कि मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। मॉडल ए में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का प्रैक्टिसेस था पहले। मॉडल बी में है मॉडर्न नॉलेज सिस्टम ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, जिसमें ब्रिक्स, स्टील और कंक्रीट, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। और मॉडल सी की जब हम बात करते हैं तो उसमें किस तरह से ए और बी को हम इंटीग्रेट करें, जिससे जीरो कार्बन नहीं होगा लेकिन मिनिमाइजेशन होगा। तो हम लोग ये इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत कोशिश की थी कि गवर्नमेंट ऑफ से कुछ निगोशिएशन हो, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। देखिए, कार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन है, और ये जो कैलकुलेशन है वो हमारे दोस्त जो आर्किटेक्चर से हैं जुड़े हुए, उसके साथ एक ब्रिक में अगर उसका वजन 1 kg का है तो उसमें कार्बन इमिशन 0.2 से 0.4 kg तक हो सकता है। सीमेंट अगर वो 1 kg सीमेंट है तो उसमें 0.6 किलोग्राम का जो है कार्बन इमिशन होता है। और आरसीसी जो कंक्रीट हम बनाते हैं, अगर वो 1 kg आरसीसी है तो उसमें 0.9 kg का कार्बन इमिशन होता है। तो इस यूनिट को बेसिक यूनिट मानते हुए इसका सोर्सेज हमने यहाँ से वो डिराइव किया है। कैलकुलेशन में काफ़ी अभी जो मॉडल बिल्ड कर रहा हूँ वो मेन जो बेसिस है वो यही है। तो इससे हम कितना कार्बन एक 1000 स्क्वायर यार्ड्स का, एक 500 स्क्वायर यार्ड्स का, एक 200 स्क्वायर यार्ड्स का, अगर हम बैम्बू का हाउस बनाते हैं विज़-अ-वी एक कंक्रीट हाउस है, तो दोनों का जो कंपैरिजन है उसको हम एक मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट के सामने हम रखेंगे कि देखिए, अगर हमारे प्रोजेक्ट को आप अप्रूव करते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट वुमेन का होगा, अभी तक ज्वेलरी और दूसरे डेली यूजेस को हम लोग जो है फोकस था, अब है कि हाउस कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस पर आ रहे हैं। इससे जो डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस है उसको हम किस तरह से उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे अचीवमेंट्स में ये बैम्बू हाउसिंग सेक्टर पे हम जो है वैल्यू चेन को हम इनिशिएट कर रहे हैं। 100 बैम्बू कॉटेज ऑलरेडी हमने डिफरेंट साइट्स में कंस्ट्रक्ट हम कर चुके हैं। 25 ट्रेनिंग्स हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और अब हमारा जो प्रायोरिटी है वो एक ख़ास तरह के बैम्बू को वो बैम्बू हाउसिंग के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में और ख़ास तौर से आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में। ये हमारे इस महीने का चार्ट है कि अभी हम लगभग 2000 फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं ये
वीकली इसी महीने का है हमारा, जो इस पे काम कर रहे हैं कि उन लोगों को प्लांटेशन के लिए, बेम्बू प्लांटेशन के लिए कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जब इसको इनिशिएट करेंगे तो उतना प्रोडक्शन एक खास टाइप के बेम्बू का होना चाहिए। तो 2000 फार्मर्स को हम ऑलरेडी, हमारा वो मोटिवेशन काम शुरू हो गया है वो इस महीने में, और ये पूरा चार्ट है कि हम किस तरह से फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक ऑफ मार्च में हम काम करेंगे। ये मेरा प्लान है हम लोग का, ट्राइबेट का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आप सुन रहे थे प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब को, जो ट्राइबेट के अचीवमेंट्स और उसकी कारकर्दगी पे रोशनी डाल रहे थे, बिलखुसूस पावर्टी रिडक्शन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और एक बेहतरीन मॉडल हमारे सामने पेश किया। अब हमारे सामने आएंगी अगली स्पीकर। मैं प्रोफेसर रेखा पांडे साहिबा को दावत देना चाहूँगी कि वो अपना टॉक पेश करें। Professor Rekha Pandey brings with her the knowledge of wealth of knowledge and expertise to our symposium, particularly in the areas of women's history, gender studies, and social activism. Ma'am, I welcome you. A very happy International Women's Day to everyone. Professor Farida, Shahida, Mateen sir, Amina. अभी टाइम 1:10 है और मैं अपनी बात डेविड ग्रीन के कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। एक बार डेविड ग्रीन, ही इज अ वेरी वेल नोन क्रिटिक, यू नो, एंड ही सेड स्पीच देना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दीजिए, एंड ट्राई टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज टुगेदर। सो आई रियलाइज दैट दिस इज afternoon, all of you are hungry. Let me see if I can finish this very fast. Today we are all celebrating International Women's Day. और आज का दिन जो है वो हम women के political, economic और social achievements को celebrate करते हैं। तो इसकी एक बहुत लंबी history है, एक बहुत बड़ा इसका celebration है। सबसे पहले 11 मार्च को 1948 में जर्मनी और प्रशिया में जब वहां के जो किंग थे उनके अगेंस्ट एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ था और उसमें बहुत सारी विमेन आई थी और उन्होंने विमेन्स राइट की बात की थी। फिर अगेन 1908 में 8 मार्च को न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा आग लगी थी एक फैक्ट्री में, and there were, you know, more than 146 garment workers who lost their lives. तो इसके लिए उन्होंने फिर 1911 में भी मार्च करा स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क में, और इसके बाद जो हुआ यूएनओ में 1975 में इसने 8 मार्च को एक रिकॉग्निशन दी है कि इट विल बी सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और हर जगह यूरोप में भी बहुत जगह, बहुत से कंट्रीज में 8 मार्च को उन्होंने एक हॉलीडे दिया, सो दैट यू नो पीपल रियलाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन। और ये जो 2011 सितंबर में बन की मून जो थे यूएनओ जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम डेवलपमेंट की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक women are not involved in it. And when we talk of women, we should recognize that the full potential of women is utilized. और उन्होंने बात की कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इतनी डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में। women do not have access to so many things, basic education, basic health care, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स और सब में। तो इसलिए इस साल का जो थीम है वो है काउंटर इन जेंडर
इक्वालिटी थ्रू एम्पावरमेंट। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर साल यूएनओ एक थीम इस दिन के लिए मुकर्रर करता है। 1997 में इट वाज वुमेन एट द पीस टेबल, 16 pledge of parity, be bold for a change, press for progress, each for equals। और इस साल की जो थीम है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है काउंटर इन। Unless you involve women inside, make it a part of it, we cannot really have gender equality। और इट वॉज ये जो थीम है इस पे काफी 70 ईयर से बहुत डिस्कशन हो रहा है, काफी कमीशंस बैठे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इससे पहले एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ, क्योंकि उस समय भी रियलाइज हुआ कि जब तक हम वायलेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम वुमेन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वी कैन नॉट हैव एनी प्रोग्रेस। तो दिस इज समथिंग विच हैज बीन फॉर्मुलेटेड दिस ईयर। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में एक विमेन्स एम्पावरमेंट ईयर सेलिब्रेट किया था, और इसका जो मेजर फोकस था कि विमेन शुड बी इक्वल पार्टनर्स विद मेन, और दिस वाज द थीम दैट वाज प्रोपगेटेड। नाउ व्हाट इज इट दैट वी मीन बाय एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट का मतलब है कि women are able to have full control over their spiritual, political, social and economic environment which is around them, and they are able to contribute with their full capacities and development। बहुत सारे parameters दिए थे empowerment के कि one should have a self confidence, positive image, one should be able to think critically, they should have a role in decision making, economic independence, so that we can bring about a change। And it was felt that there are so many impediments to empowerment। जब हम empowerment की बात करते हैं, आधे से ज्यादा women जो है उसका पार्ट ही नहीं होती हैं, क्योंकि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, women के पास इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वो लोग इजिली मूव नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, और एज जनरली उनका एम्बिशन लेवल बहुत लो होता है, अचीवमेंट लेवल भी बहुत लो होता है। तो ये जब हम एम्पावरमेंट को एज ए हिस्टोरियन में आई लुक एट इट, इसका भी एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। जब वर्ल्ड में मेनी वुमेन गॉट टुगेदर, जब ये डिस्कशंस हो रहा था डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, तब बहुत सारी औरतें आगे आई और उन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट तब तक इररेलेवेंट होगा अनलेस वी इंक्लूड विमेन इन इट। तो जो फर्स्ट हमारे जार्गन्स और स्लोगन्स आए थे, बेसिक ह्यूमन नीड्स, मीटिंग द नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ग्रोथ ऑफ इक्विटी वाज समथिंग व्हिच वाज देयर। फिर इसके बाद सेकंड जो स्टेज आया, वी सेड नो, ओनली डेवलपमेंट इज नॉट इनफ, वी नीड टू इंटीग्रेट वुमेन इनटू डेवलपमेंट। क्योंकि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि विमेन इनकम जनरेशन में इन्वॉल्व है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। बट इस स्टेज में भी क्या हुआ, केवल अर्बन विमेन तक ये प्रोजेक्ट्स पहुंचे, अर्बन विमेन तक ये राइट्स पहुंचे, एंड मेनी ऑफ द रूरल विमेन वेर लेफ्ट बिहाइंड। देन मेनी फेमिनिस्ट केम एंड दे रेज द क्वेश्चन of development from a feminist perspective। अभी तक हम चाइल्ड केयर, चाइल्ड रियरिंग, इसकी हम बात ही नहीं करते थे, सेक्सुअलिटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, ये सब डेवलपमेंट के हिस्से नहीं थे, और बहुत सारे फेमिनिस्ट ने इसको इंक्लूड किया एजेंडा में, और ये कहा कि जब तक हम ये सारे एजेंडा को अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट द वुमेन कम्स आउट, शी इज इन कंट्रोल ऑफ अ लाइफ सिचुएशन, वी कैन नॉट हैव एम्पावरमेंट। तो ये इतने डिसएडवांटेजेस है वुमेन के। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, our gender relationship in terms of, if you look at the society around us, we see so many discrimination। अगर हमारे इंडिया के आप 5-year प्लान्स भी देखो, वी ऑल्सो मूव्ड अलोंग द सेम लाइन। सबसे पहले हम लोग केवल वेलफेयर अप्रोच करते थे, फर्स्ट 5-year प्लान टू 5th 5-year प्लान, केवल अप्रोच जो था वेलफेयर, वी हैव टू, विमेन आर बैकवर्ड सो वी नीड टू गिव वेलफेयर टू देम। और ये पॉलिसी आई थी कि जो भी प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है उसमें 30% शुड बी रिजर्व फॉर विमेन, इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, एक्सेट्रा।
लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो 6th प्लान ऑनवर्ड्स जो था, इन 7th प्लान ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वेलफेयर टू डेवलपमेंट। और यहाँ पे DST स्टार्ट हो गया था। वी हैड लॉट ऑफ नोडल डिपार्टमेंट्स। 8th 5-year प्लान में नेशनल कमीशन आया। बट जब हम 9th प्लान में आए तो तब जो है पहले वेलफेयर से हम डेवलपमेंट में गए, डेवलपमेंट से हम एम्पावरमेंट की तरफ बढ़े और एम्पावरमेंट की बात करने लगे। चाहे बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शंस हुए 10th प्लान, 11th प्लान, 12th प्लान में। और जो एक नेशनल पॉलिसी फॉर विमेन आई, उसमें भी ये एम्फसाइज किया गया था कि विमेन शुड हैव enjoy all the human rights, they should have access to health, quality education, or there should be a gender perspective, we should be able to remove all kinds of discrimination. तो ये पूरी पॉलिसी का जो फोकस था कि विमेन की सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस बढ़े, दे टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। बट जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो 3 मेजर एरियाज में हमको फोकस करना पड़ता है। 1, एजेंसी, वो विमेन की अपनी क्या एस्पिरेशंस है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है। If she doesn't have aspirations, we should get those aspirations, we should build her capacity. मैं बहुत साल महिला समाख्या, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, उससे मैं एसोसिएट हुई हूँ 2 टर्म्स। उसमें वो लोग पूरे कंट्री से 10 लोगों को चुनते हैं और आप 2 स्टेट्स चुन सकते हो। तो मैंने इन 3 states you could choose। तो गुजरात में आई लुक्ड एट दिस प्रोग्राम, इन झारखंड, आंध्र प्रदेश तब था, एंड देन उत्तराखंड, यूपी। तो वहां जाकर के जब हम इंटरेक्ट करते थे, तो सबसे पहले बहुत सारी औरतें पंचायत में थी, बट वो केवल वहां जाती भी नहीं थी। उनका सारा टाइम केवल रसोई में खाना बनाने में। बहुत सारी औरतें उस समय पर्दे में रहती थी, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी। उनके पास रजिस्टर भेज दिया जाता था, वो साइन करके अपने हस्बैंड को थमा देती थी। तो हम एजेंसी की जब बात करते हैं, एक हमको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना है, एक उनके अपने एस्पिरेशंस को वी हैव टू एनकरेज। और दूसरी जो बात है, वो स्ट्रक्चर कैसा है हमारे चारों ओर, व्हाट इज द एनवायरनमेंट जिसमें वो एक चॉइसेस अपने लेती है। और थर्ड जो एक रिलेशनशिप है, क्योंकि सोसाइटी में आप देखते हैं देयर इज सो मच ऑफ पावर रिलेशनशिप जिसमें विमेन को नेगोशिएट करना पड़ता है। सो वी नीड अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच टू एनवायरनमेंट, जहां पे ये सारे इश्यूज को हम लें। इतने जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, इतनी जेंडर इनइक्वालिटी है आज हमारी सोसाइटी में। मैं पिछले 10 साल से मारी चन्ना रेड्डी में आई एम इन्वॉल्व। जो भी IAS ऑफिसर्स आते हैं, उनकी सारी ट्रेनिंग जो होती है वो मसूरी में होती है। अब वहां पे इतनी भीड़ हो गई, तो वो हैदराबाद में भी काफी उनकी ट्रेनिंग होती है। तो आई इंटरेक्ट सो मच विद देम एंड दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू आंसर। आप एक ऐसे लिखने को दीजिए, उनको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे या 20 में से 19 नंबर मिलेंगे, बिकॉज दे नो व्हाट इज टू स्पीक पॉलिटिकली राइट। हमको क्या लिखना चाहिए, हमको कैसे बोलना चाहिए ताकि हमको इसमें मार्क्स मिले। लेकिन अपना माइंडसेट आपका चेंज नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ देयर इज नो चेंज। तो इसको हमको डील करना है। 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि women ने इतना historically they have suffered, they don't have those kinds of to provide a fair playing field, we have to give equity कि उनके historically they had so many advantages, तो हमको equity देना है, and from equity we can lead to equality। equality जब हर कोई बराबर है। तो एक ये एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इक्विटी का मतलब आप जिसको जितनी जरूरत है आप उसको उतना देंगे। इक्वालिटी में आप सबको इनको बेसबॉल, बच्चों को बेसबॉल मैच देखना है तो सबको आपने एक स्टूल दे दिया, चाहे उसको दिखे नहीं दिखे या किसी को जरूरत नहीं है। बट जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जिसको जरूरत नहीं है आप नहीं देंगे, जिसको 2 की जरूरत है आप 2 देंगे। तो वी हैव टू रियली स्टार्ट विद इक्विटी। और एक हमारे इतने कंस्ट्रेंट्स है, मैं क्विकली इस पे जाऊंगी कि इसको मैं 4 Gs कहती हूँ। I have written a lot about it. You can see many of my articles published. And one is our attitude towards the girl child. The second is gender violence.
Third is our reaction to globalization. Morning में मैं सुन रही थी Professor Arun Kumar का very interesting lecture. He spoke so much about globalization. And fourth is the gender impact of Corona. आज हमारे मन में इतना बायस है फॉर अ गर्ल चाइल्ड. आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए. 1901 में फॉर एवरी 1000 बॉयज वी हैड 972 गर्ल्स. वो घटते घटते 964, 950. 2023 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है. फॉर एवरी 1000 बॉयज वी हैव 1020 गर्ल्स. बट ये केवल अर्बन एरियाज में. रूरल एरियाज में फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ स्टैटिस्टिक्स में. For every 1000 boys, we only have 985 girls. अगर आप देखिए स्टैटिस्टिक्स, हम किस तरह सिस्टमैटिकली गर्ल पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही इंडिया में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप हिंदू वे ऑफ लाइफ देखिए, पुराने जो हमारा 3500 साल पुराना अथर्ववेद में जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, बोथ हस्बैंड वाइफ गो एंड प्रे एंड से, ओ गॉड ग्रांट अस अ सन हियर. यहाँ लड़का दो, लड़की कहीं और पैदा करना. और ये सारे जो प्रोवर्ब्स हैं, आप सारे उनको पढ़िए. कोई भी आप हमारे ओल्ड इसको जो एपिक्स को देखें, सबके 100 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं. लड़कियों का तो बहुत कम नाम आता है. तो इट इज सो सोसाइटी सो मच सेंटर्ड ऑन द सन. लड़के को ये पुत्र शब्द, जो पुत्र शब्द से आया है, हु कैन सेव यू फ्रॉम पूत, दैट इज हेल. तो आप लड़के पर अपना डेट डाल सकते हैं, लेकिन लड़की पे आप नहीं डाल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदू वे ऑफ लाइफ, आप इस दुनिया में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं, तो आपको अपने 3 ऋण पे करने पड़ते हैं. एक भगवान को, एक अपने एंसेस्टर्स को, और एक अपने सेंट्स को, गुरुज को. और इन तीनों में केवल लड़के की ही इंपॉर्टेंस है. तो जब इतना हम 3500 साल की एक सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इमीडिएटली टुडे. आज आप प्रोवर्ब्स देखिए. आई डू अ पॉडकास्ट, ये मैंने केवल तेलंगाना के प्रोवर्ब्स लिए हैं. आप कोई भी रीजन में देखें, इतने प्रोवर्ब्स हैं दुनिया में भी, बिकॉज एवरीवेयर इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. We started with slave mode of production, ancient mode of production, feudal mode of production, capitalist mode of production, socialist mode of production. But patriarchy जो है वो continue होती है. और जहाँ पे भी there is a change, it is the women who come forward and say no, we don't want this. ना चाहे आप जब ये रूप कवर का वो जो सती सेलिब्रेट करना चाहते थे, ट्रिपल तलाक की बात लीजिए, आप मेंटेनेंस की बात लीजिए, because women also internalize a lot of these values. तो ये प्रोवर्ब्स क्या है हमारे? दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर. लड़कियों को ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज लाइक वाटरिंग प्लांट्स इन समवन एल्सेस गार्डन. और अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको लड़की पैदा होगी. और लड़की की शादी करना तो अश्वमेध यज्ञ के जो सबसे मुश्किल यज्ञ माना जाता वैसा है. और क्या इट इज जंगल में एक पेड़ पैदा होना ज्यादा अच्छा है बनस्पत लड़की होने के? तो ये जो प्रोवर्ब्स हैं वो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट को बताते हैं. वायलेंस आप देखिए, आज हम इतना इम्यून हो गए हैं वायलेंस को. आप टीवी में सुनते हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारे लिए. वी डोंट थिंक अबाउट इट सीरियसली. इतने एक्ट्स आ गए, इतने यू हैव, बट स्टिल वी हैव सो मच ऑफ वायलेंस. और एक और चीज इसका मेन रीजन है कि साउथ एशियन कल्चर्स में वी हैव डिफाइंड मैस्कुलिनिटी एट द एक्सपेंस ऑफ विमेन. पार्टीशन के टाइम में क्या हुआ था? मुस्लिम men went and raped Hindu women, they cut their body parts. Hindu men went and raped Muslim women, cut their body parts. It was not that they were taking revenge against these women, but they were sending a message that you are not man enough to protect your women. आज भी क्या होता है, जब कोई कम्युनल क्लैशेस होते हैं, जब कास्ट वायलेंस होता है, सबसे पहले women are the one who suffers. जब हम वायलेंस की बात करते हैं, हम वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने एक औरत को मार दिया घर में. वी हैव टू calculate the economic cost of violence, we have to calculate the political cost of violence, the social cost. There is an organization called Institute of Economy and Economics and Peace. इसने कैलकुलेट किया है कि वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ वायलेंस एवरी ईयर 14.76 ट्रिलियन, मैं मिलियन बिलियन की भी नहीं बात कर रही हूँ, ट्रिलियन, जो कि
हर आदमी जो अलाइव है, अगर हम उसको रुपीस में देखते हैं, हर पर्सन हु इज अलाइव 1,48,811 रुपीस खर्च होता है। क्योंकि जब हम वायलेंस होता है, अगर औरत को चोट लगती है, शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल, शी हैज टू बी ट्रीटेड, अगर उनको सेपरेट होना, डिवोर्स लेना, तो लीगल कॉस्ट होते हैं। वो औरत जिसको मारा गया है, वो अगर जॉब पे नहीं जा सकती है, शी हैज टू स्टे होम, शी लूजेस हर इनकम। इवन द पर्सन हु इज द factory owner or the other person loses the job. There is also a social cost. We have said the family is such a great unit. कुछ भी नहीं है तो family तो हमेशा रहेगी। हम family को एक बहुत अच्छा वायबल इंस्टीट्यूशन की तरह पेश करते हैं, लेकिन जब बच्चे देखते हैं फैमिली में कि फादर माँ को मार देते हैं और वो कुछ भी ही इज एबल टू गेट एनीथिंग, तो हम क्या लेसन भेजते हैं? So therefore, it teaches you a lot of inequality. What decision will a woman take with regards to nutrition, childcare, other kinds of, reproductive health, if there is violence in our society? एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी वायलेंस का होता है, क्योंकि हम सब बात करते हैं एम्पावरमेंट की, एलिवेशन फ्रॉम पॉवर्टी। पहली बार 1994 में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि we cannot, human security has to start from human beings and the women at home. इससे पहले जब हम 1994 से पहले हम ह्यूमन सिक्योरिटी की क्या बात करते थे? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरस्टेट टेररिज्म was something which was there. So we cannot strengthen the society if we have violence. ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस। एक लड़की पे 10 लोग उसे अर्न करते हैं, वो लड़की जो है बिल्कुल पावरलेस, हेल्पलेस होती है। ऑल दिस आई हैव रिटन इन माय बुक ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग। आप अगर आज वर्ल्ड के डेस्टिनेशन देखिए, लेस डेवलप्ड कंट्री से मोर डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, देयर इज सो मच। हमारे उसमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन भी थे, देवदासीज एक्सेट्रा, दे ऑल गेट इनटू वायलेंस। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है, और आप लोग सब हम लोगों के टाइम में जब हम यंग थे तो सवाल ही नहीं होता था कि यू थिंक बिकॉज यू आर बोर्न अ वुमन यू हैव टू डील विद इट। देयर आर सो मेनी मिथ्स व्हिच आर क्रिएटेड। आप फिल्मों को देखिए, फिल्म में जो शो किया जाता है कि जो सबसे सुंदर लड़की है, हीरोइन है, उसको लोग हैरेस करेंगे, शी डजंट लाइक इट, बट फाइनली शी फॉल्स इन लव विद दैट बॉय। तो हम उसको इतना प्लीजिंग बना देते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन, आज हम वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि वर्ल्ड इज वन, इट्स लाइक अ विलेज। तो गुड्स जो है बड़ी इजिली आ जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पिज्जाज, बर्गर्स आर कमिंग, बट अगेन वीजा रिस्ट्रिक्शंस आर बिकमिंग मच मोर स्ट्रिक्ट। तो न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन जिसकी प्रोफेसर अरुण वाज टॉकिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पैक्ट जो कोरोना से हुआ है आज जेंडर इश्यूज पे, एक आप लोगों ने सबने देखा है कितना वर्कलोड इंक्रीज हुआ है। इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 6 घंटे इंडियन विमेन स्पेंड 6 आवर्स ऑन डूइंग अनपेड वर्क। आज भी आप किसी से पूछिए कि व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज, ओह शी डज नथिंग। खाना कौन बनाती है? ओह माय वाइफ डज। हु कुक्स? माय वाइफ डज। अगर मैं किसी और के घर में जाके खाना पका रही हूँ और मेरे को सैलरी मिल रही है तो वो वर्क है, लेकिन मैं अपने घर में पका रही हूँ, दैट्स माय ड्यूटी, वो तो मेरे को करना ही है। अगर मैं जाके कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ तो वो सैलरी मिलती है, दैट इज वर्क। बट अगर मैं अपने घर में, वो तो मेरी ड्यूटी है। And women are part of all these unmonetized sectors. So we need to really change these definitions. And Corona really brought down the gender, inequality in a great sense. It had so much impact on school. Look at the world map. So many schools were closed. It added more burden. But सबसे ज़्यादा domestic violence, इतना increase हुआ, not only in India, all over the world. The National Commission of Women came up with a WhatsApp number, और 2 हफ्ते में it had 40 messages. More than 536 cases were reported in 3 months. तो therefore, I would conclude कि जब हम empowerment की बात करते हैं, जब हम inequality eliminate करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको कहाँ से शुरुआत करनी है? अपने से, इंडिविजुअल से।
We have to really, make a pledge about our immediate action. हम प्राइवेट में और पब्लिक में एक ही तरह रहें, ये नहीं कि दो अलग मुखौटे लेके रहें. We should learn to measure our masculinity in terms of equality. और सबसे पहले हमको अपने बेटे को सिखाना पड़ेगा कि to fight against inequality घर में, और लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि वो बोल सकती हैं. और हमको मिलेनियम में आगे बढ़ना, एक न्यू अप्रोच हमको चाहिए. और सबसे पहले हमको ये कहना पड़ेगा कि विमेन्स इश्यूज आर नथिंग बट सोसाइटल इश्यूज. मेरा जब बहुत डिस्कशन होता था क्लास में विद स्टूडेंट, तो मैंने इसे, मैम आई डोंट बिलीव इन डाउरी, आई विल नॉट टेक डाउरी, बट इफ माई पेरेंट्स टेक व्हाट कैन आई डू? And then I said, fine. आज तो कहते let the girls bother, it is their issue. I said, fine, it is the girls' issue. आज क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही तो वो लड़कियों का इश्यू है, लेकिन कल जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तब किसका इश्यू होगा? तुम कहोगे let my wife handle it, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे. तो women's issues are nothing but they are societal issue. They are issues which are of concern of society. और अगर हम empowerment लाते, equality लाते हैं, तो definitely the whole society will be one. Thank you. Thank you very much, ma'am. We are sorry that we couldn't give you more time, but you tried your best to deliver the theme of today's symposium, Countering Gender Equality Through Empowerment. Thank you very much. और हमारे अब इख्तिताम का वक्त हो चुका है, तो मैं अब प्रोफेसर शाहिदा मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने सदारती खिताब से हमें नवाजें. Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. Because of paucity of time, it can't be a lecture. I just have to. Urdu. Sorry. I'm so sorry. I keep forgetting that. आज का जो सेशन रहा है बहुत ही बेहतरीन, एक्सपर्ट्स आए. खासतौर पे मैं तो बोलूँगी पिछले सेशन में भी जो अरुण जी ने बात की, I tell you, it was really an eye opener. बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मालूमाती लेक्चर रहा, जिसके लिए मैं शायद लंच में अगर अवेलेबल है वो तो बात और करना है उनसे. बिकॉज सो फार हम तो इन्हीं आंकड़ों पे डिपेंड हो रहे थे जो हमें, अरे भाई हम बच्चों को बोलते हैं. आज आई फेल्ट सो कि भाई अब बच्चों को हम किस आंकड़ों की बात करेंगे कि ये बहुत ही अच्छे हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो ही लीजिएगा. पता चला कि ये तो अपने कंट्री के अपने सर्वे होते हैं और वही देते हैं और उसी को वो लोग लेते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी बहुत रॉन्ग है. आज के इस सेशन में जो डाइवर्सिफाइड आइडियाज हमें मिले हैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मतीन साहब ने जो इकोलॉजी की प्रोटेक्शन, विमेन एम्पावरमेंट और क्या कहें लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स के बारे में एक नई दिशा इन्होंने दिखाई है आज, विच आई वाज जस्ट बात कर रही थी उनसे कि अगर पॉसिबल है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं उस चीज़ को. इसी तरह हम दूसरे ट्राइबल जो खवातीन हैं यहाँ, जैसे शहद बनाना और कई प्रोडक्ट्स हैं, उस चीज़ को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं इसकी भी बात की जा सकती है. I want to really thank him for doing that, presenting here. यहाँ इन्होंने बहुत ही तफसीली तौर पे पेश किया, हालांकि कम टाइम में, लेकिन it was very comprehensively presented. रेखा मैडम से पहले मैं बताऊंगी कि जोया हसन मैडम ने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि खवातीन की सियासी जो हिस्सेदारी है उसकी जो प्रॉस एंड कॉन्स है या जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कब से वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात किया उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इस चीज़ को रखा और ये भी रखा कि किस तरह से डीलिमिटेशन को लाके एक यहाँ से बोलूँगी झूठा वादा है, क्या पता इसके पीछे क्या मतलब मकसद है जो मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ आप लोग सब समझ सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था, इसके पीछे क्या है, और फिर डिलिमिटेशन का जो दुम छल्ला जो बोलते हैं वो लगाया. ये नहीं देने की बातें हैं और देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस पॉलिटिकल मूव
अब रहा रेखा मैडम का, जो हमेशा से बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत ही वसी पैमाने पे अपनी बात करती हैं, और हमें लगता है कि शी गोज बैक एंड फ्रंट व्हेन शी डिस्कसिंग, और दैट gives lot of knowledge to the newcomers here, जो दूसरे मज़ामीन से जिनका ताल्लुक है उनको पता चलता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, एम्पावरमेंट क्या है, खुद मुख्तारी क्या है, और फिर ये कि इसको हासिल करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये बहुत पेचीदा है। एम्पावरमेंट ऐसा नहीं है कि भाई गए और बाजार से खरीद के ला दिया, तो इसमें क्या क्या अनासर इन्वॉल्व हैं इस पे इन्होंने बात की। आज 70 साल हमारी आज़ादी के और कई साल हमारे UN इनिशिएटिव के हो गए हैं कि ख़वातीन को इक्वालिटी। इससे पहले KD स्टैंटन का उसका इसका आपने कारखाने की आग की बात की जो लगी थी 18वीं सदी 17वीं सदी की बात, आज भी वही जहाँ शुरुआत हुई थी। एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज मुझे लग रहा था कि जेंडर इक्वालिटी वी हैव टू टॉक ऑफ, एंड इंशाल्लाह उस पर बात होगी नेक्स्ट। आई गॉट रियली ब्यूटीफुल आइडिया फ्रॉम देयर ऑन। Alhamdulillah, everything is coming to an end today, and again in the afternoon we have Al-Atas Sahab को सुनना है, जिस तरह हमने अब तक सुना एक्सपर्ट्स को। मैडम का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। रेखा मैडम, एज ऑलवेज आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना मुद्दा रखा एम्पावरमेंट का, खास तौर पे काउंटर इन UN का जो अपना ये साल का स्लोगन है उसको लिया। हालांकि एक चीज आपने छोड़ा कि इन्वेस्ट इन वुमेन, इन्वेस्ट करिए, उसके हर एस्पेक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आज हम सचर कमेटी को लीजिए, बहुत पुरानी टुवर्ड्स इक्वालिटी, उससे पुरानी रिपोर्ट पोस्ट सचर कमेटी कुल्लू साहब की रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्या मिला, जहां थे वही है। एक अजीब सा एनिग्मेटिक सिचुएशन है। एक तरफ हम शायद कुछ आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें पीछे खींचा जा रहा है। नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं वायलेंस के। जैसे ही औरत बाहर आई, कुछ और तरीके वायलेंस के, पहले घर में चलाया जाता था, बाहर जाता था। एनीवे, देयर आर सो मेनी सीरियस इश्यूज हैं जिस पर हमें बात करना है। विमेंस डे हमें ये मौका फराहम करता है कि हम सीधा सीधा इश्यूज पे बात करें, और इन तमाम को हमारे नए नए जो बच्चे आते हैं यहाँ पे हर साल, उनसे इन तमाम को इंट्रोड्यूस करें, मुतारुफ करें कि औरत कहाँ ठहरी है। ये तुम्हारे दिल के करीब होना चाहिए तमाम इश्यूज। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने का, मीना मैडम, थैंक यू। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर शाहिदा मैम। अब चूंकि वक्त हो चुका है नमाज का भी और लंच का भी, और हमारा नेक्स्ट सेशन शार्प 3 o'clock को शुरू होगा। प्रोफेसर फरीद साहब हमसे मुखातिब होंगे, ऑनलाइन सेशन है तो हमें यहाँ पे वक्त पे होना है। तो मैं तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करते चलूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका बेहद शुक्रिया कि वो वक्त की ताख़ीर के बावजूद यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं तमाम स्पीकर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोफेसर ज़ोया हसन साहिबा का जो हमसे ऑनलाइन जुड़ी, प्रोफेसर रेखा साहिबा का जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हमारे सामने दिया, और प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब जिन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन मॉडल हमारे सामने पेश किया, और हमारी डीन साहिबा का भी बहुत शुक्रिया जो बहुत कामयाब रही गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को एक छत में लाने के लिए, वो बहुत कामयाब है, उसके लिए उनको मुबारकबाद। और हमारी शोबे की सदर प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा का भी शुक्रिया जिन्होंने इस सिंपोजियम का इनकाद इस मौके पे किया। मैं फर्दन सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया।